Hello everyone, in this video I shall be talking in detail about the simplex method of solving an LPP in maximization case with less than constraints. In my further on videos I'll be completely discussing the simplex method with the exceptions also in minimization case with greater than constraints and then with mixed constraints. So stay tuned, subscribe, like and share this video as well as subscribe the channel for more views. For more videos. I've taken an example: maximize z 6x1 plus 8x2, 2x1 plus 3x2 less than equal to 16, and 4x1 plus 2x2 less than equal to 16. This is a very common problem that you can find in your examinations. I'll solve this in complete detail for you. So first I'll convert the constraints and the objective function. Maximize z is equals to 6x1 plus 8x2, and the constraints are 2x1 plus 3x2. So in order to convert the less than constraints into equal to constraints, I would add something is missing, so we'll add the slack variables. These are called as slack variables. So this is slack, so this will be added with a 0 value in the objective function also. And similarly for the next equation, I would add this 0 s1, since s1 is not present in this equation, so I'll add s2 and 0 s2 over here, and then this will make my equations equal to, so same as with the objective function. So this will balance my equation, so the less than constraint is converted into equal to constraint in this way. Then coming to the simplex table, so simplex table 1, how would I write down the values? So I'll start with the basic variable column. Basic variable, we have the quantity we have is x1, that is this and this, x1, x2, s1, s2, and this is how I make my table. And this is the minimum ratio column that we have. Okay, so here we have CG stands for contribution, so CG is written over here also and over here also. So CG is contribution. यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के जो वैल्यूज़ हैं, x1 की 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 0 है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी वैल्यूज़ हैं. इधर आपने वो लिखनी है जो इनकी वैल्यूज़ हैं इन द कंस्ट्रेंट्स 2 3 1 and 0 and 0 and 1 and 4 and 2, and the quantity is, as you know, is 16, and the basic variables always are the slack variables s1, s2. If we have artificial variables, we'll talk about that later, so that will be your basic variable. And in the objective function they have 0 0 values, so I'll write here 0 0. So for the first equation, what we do for the calculations is I would calculate zj. Zj is my total contribution, and I'll opportunity cost is the difference between cj minus zj. So this is my contribution and this is the opportunity cost. Opportunity cost का मतलब होता है कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो उसकी जगह कोई और ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो उससे क्या कॉस्ट बढ़ेगी कि कॉस्ट घटेगी, वो मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. तो हम देख लेते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है कि घट रही है जब हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 मल्टीप्लाई बाई 16, वील ऐड दिस अप, सो 0 into 16 plus 0 into 16, and this will be for all the variables 0 into 2, 0 into 4, 0 0 0 0, and then 6 minus 0 is 6, 8, 0 and 0, since it is maximization case, so my cost is increasing as a result of making these changes. So I will go on, I'll carry on the sum until and unless I achieve a cost which minimizes my cost. So फिलहाल ये पॉजिटिव आ रहा है तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ रही है ऑप्शन एक्सरसाइज करके. तो मैं कौन सा की रो सिलेक्ट की कॉलम सिलेक्ट करूँगी, दिस विल बी माई की कॉलम जहाँ पे मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, मैंने उसको मिनिमाइज़ करना है, तो मैं इसको एंटर कराऊँगी. अब मैंने क्या वेरिएबल एंटर करा दिया है, मैंने x2 वेरिएबल एंटर करा दिया है, और मेरा एग्जिटिंग वेरिएबल कौन सा होएगा वो हम मिनिमम रेशियो कॉलम से देखेंगे. तो मिनिमम रेशियो कॉलम में वैल्यू कैसे आएगी, मिनिमम रेशियो कॉलम की वैल्यू आएगी, इट इज़ द क्वांटिटी कॉलम डिवाइडेड बाय द की कॉलम. सो 16/3
and 16 by 2, we know it is 8, this is 5.33. So इसमें से हमेशा मिनिमम रेशियो कॉलम में से छोटी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है. सो ये मैंने एग्जिटिंग वेरिएबल अपना डिसाइड कर लिया है. सो एंड दिस इज माई की रो and the point of intersection of key and column 3 element is my key element. This is my key element. Now further on to the simplex table 2, I'll carry forward these values and make another table, simplex table 2. So for this, next is simplex table 2. Simplex table 2, simplex table 2, again the same columns we have is the basic variable, we have is the quantity, we have x1. now as you can see that I have entered x2 enter कर गया है और exit कौन सा करा है, जो की रो है वो exit कर गया s1. तो अब मैं यहाँ पे basic variable में x1, x2, s1, s2, I know they have these values 6, 8, 0, 0 and this is my minimum ratio column, right? So in this case I'll simply do is, now my basic variables have changed. now x2, s1 को x2 ने रिप्लेस कर लिया और s2 अपनी जगह पे है, इसकी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 8 है, इसकी 0 है. एंड नाउ हाउ वुड आई डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ द की रो. की रो की वैल्यूज होंगी, हर वैल्यू की एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा. 16 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3. सो ये ऐसे आ जाएगी हमारी वैल्यूज़. एंड फॉर द नॉन की रो क्या करना होता है, सारी पुरानी वैल्यूज़ लिखनी है. नॉन की रो की कंपटीशन कैसे करनी है, नॉन की रो की कंपटीशन कैसे करनी, मैंने सारी पुरानी वैल्यूज़ लिख ली हैं. 16, 4, 2, 0 एंड 1, माइनस 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 माइनस. नाउ आई विल राइट द एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द की एलिमेंट. यहाँ पे 3 था, इस रो के लिए की एलिमेंट क्या है 2. सो आई विल राइट डाउन 2, 2, 2, 2, 2 और जो नया की रो है मल्टीप्लाई बाय द न्यू की रो. सो न्यू रो है 16 by 3, 2 by 3, 1 and 1 by 3 and 0. So I'll compute these values and write it over here. एक करके दिखा देती हूँ. 16 minus 32 by 3, so this is 48 minus 32 by 3, so this is 16 by 3. तो ये 16 by 3 आ गई वैल्यू, 8 by 3 आ गई, 0 minus 2 by 3, 1. ऐसे आप कंप्यूट करते हो. फिर से हम निकालेंगे अपने ZJ मैंने कैलकुलेट कर लिया. 128 by 3 आया, 16 by 3 आया. इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और दोनों को प्लस कर देना है. 8 by 3 since it is 0, so this is 0. फिर CJ minus ZJ सेम तरीके से 16 माइनस, जैसे मैं करके देख लेती हूँ. 6 minus 16 by 3, तो 18 minus 16 by 3, तो 2 by 3 आ गया डिफरेंस. तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया मेरा 2 by 3. यहाँ पे 8 minus 8, 0, CJ minus ZJ, यहाँ पे minus 8 by 3 और यहाँ पे अभी भी मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. इसको एंटर करा दूंगी एज वेरिएबल एंड नाउ दिस विल बिकम माई की कॉलम एंड एंटरिंग दिस. ठीक है, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट कर लेती हूँ. मिनिमम रेशियो जैसे आपको बताया था कैसे आना है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द की एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम. सो 16 डिवाइडेड बाय 2 by 3, 3 by 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8. सो यहाँ पे मिनिमम रेशियो कॉलम में 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और मैंने मिनिमम पॉजिटिव लेना होता है, तो ये मेरा एग्जिटिंग वेरिएबल हो जाएगा, ये की रो हो जाएगा और इनके इंटरसेक्शन पे एलिमेंट है 8 by 3. देन मूविंग ऑन, क्योंकि तब तक सम करना है जब तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव नहीं आ जाती. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब नेगेटिव आएगी, वो तब नेगेटिव आएगी जब मेरा आंसर आ जाएगा. सो व्हेन CJ माइनस ZJ विल ऑल बिकम 0 और नेगेटिव, मतलब मेरी कॉस्ट अब बढ़ नहीं रही, घट रही है. तो इन दैट केस आई विल स्टॉप डूइंग द सम. सो नाउ आई विल फॉर द टाइम बीइंग आई विल मूव टू simplex table 3 for now. And again basic variable we have is the quantity column and we have now what is the variable entering. The variable entering is x1 and exiting is s2. So here it is now x2 and x1 over here. So this is how we do it. And then
Moving on to the values similarly as calculated before, S1, S2 and the minimum ratio column. So we move on to these values, and the values computed in the same way. So this is 8 in the objective function Cj, 8 6 8 0 0, and this is 6 and this is 8. And again I'll divide the elements 16 divided by 3 divided by 8 by 3, 16 by 3 divided by 8 by 3. So the elements of the key row is computed in this way. So this is 2, divide all the elements with the key element, so I get these values. And for the non-key row, you know the formula, the entire non-key row, the entire old row elements minus the new row multiplied by the corresponding element to the key element, that is 2 by 3 over here. So I'll sort this out and I'll get the values 4 0 1 1 by 2 and minus 1 by 4. And again I'll multiply this and get the values of Zj, which is 44 in this case, 6 8 25 by 10 and 25 by 100 in this case. Now Cj minus Zj would be the opportunity cost. 6 minus 6 is 0, 8 minus 8 is 0, this is minus 25 by 10, this is minus 25 by 100. So since the opportunity cost have become negative, I have achieved my answer. So this is the final value of, so maximize Z is equals to 44, where x1 is equals to 2, x2 is equals to 4. And I can put this in the objective function and check this. My objective function was 681, maximize Z is equals to 6x1 plus 8x2. So I'll put the value of x1 as 6 and 8 as 8 into 8. So this is 36 plus 64. So in this case I'll get this value. So in this case the contribution would be so the quantity has to be multiplied, sorry. So this is 6 into 4 and 6 into 2 and 8 into 4. So 8 4 are 32 and 6 12 32. So this is 44. So this is the value you get. So don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching.